हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। ये टॉपिक तुम लोग क्लास 10 में भी पढ़े हो, ये टॉपिक क्लास 11 में भी प्रेजेंट है और नीट और जेई के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लेट अस स्टार्ट। सो आज का टॉपिक है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। This experiment was performed by the scientist Rutherford in the year 1911. So let us start with his experiment. So Rutherford took a lead block. He took a lead block. And at the front of the lead block, there was present a radioactive metal. It was radium or uranium. We know about radioactivity. What is radioactivity? The element which gives out the radioactive emission, it actually radiates three color of radiation. One is called alpha ray, one is known as beta ray, and the other is known as gamma ray. Before starting this experiment, we have to actually know what the rays are. Alpha ray is nothing but हीलियम डाइपॉजिटिव आयन, तो इसको हम लोग पॉजिटिव रे भी बोल सकते हैं। ओके, बीटा रे इट इज नथिंग बट इलेक्ट्रॉन ट्रेवलिंग विथ अ ह्यूज स्पीड ऑफ लाइट, इट कैन बी प्रेडिक्टेड एज नेगेटिव रे। एंड गामा रे, दिस इज अ न्यूट्रल रे विथ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी, इट्स अ न्यूट्रल रे विथ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। ओके, आउट ऑफ दिस थ्री रेज the ray which has mass is alpha ray, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का मास 0 के बराबर है। गामा रे का तो कोई मास ही नहीं, इट्स ओनली एनर्जी। सिर्फ जो मास है दैट इज प्रेजेंट इन द अल्फा रे व्हिच इज हीलियम आयन। 1 meter away from the lead block, okay, 1 meter away from the lead block, there was a very thin gold foil. There was a very thin gold foil and the thickness is 0.004 centimeter thickness only. 0.004 centimeter thickness only. Behind this gold foil, there was a fluorescent membrane made up of zinc sulfide or barium platinocyanide. Made up of zinc sulfide or barium platinocyanide. Now, next point will be what was the observation took by Rutherford. When he switched off all the light in the room, Rutherford found that the fluorescent screen is scintillating everywhere. The fluorescent screen is scintillating everywhere. मतलब it is almost everywhere scintillating. It is bright in every portion, except the middle portion, which is not bright, it is dull. तो रदरफोर्ड थॉट कि ऐसा क्यों हो रहा है, एंटायर स्क्रीन जल रहा है सिर्फ मिडिल वाले पोर्शन को छोड़ के, ऐसा क्यों हो रहा है? तो ही ऑब्जर्व की ऐसा इसलिए हो रहा है कि ये जो रेडियम और ये जो यूरेनियम है, इससे क्या अल्फा पार्टिकल्स निकल रहा है, एंड ऑल द अल्फा पार्टिकल्स आर कमिंग इन द स्ट्रेट लाइन. इट इज हिटिंग द जिंक सल्फाइड स्क्रीन and therefore the screen is scintillating everywhere. So he made a beautiful observation कि 99% of alpha particles, 99% of alpha particles move in a straight line. 99% of the alpha particle moves in the straight line. Okay, next point. He also found कि ये जो स्किंटिलेटिंग रेडिएशन है, इसका जो डेंसिटी है वो ऊपर में थोड़ा सा ज्यादा है, नीचे में थोड़ा सा ज्यादा है और मिडिल पोर्शन में एकदम उसका कोई असर नहीं है। उसका मतलब ये भी हो सकता है ना कि कुछ कुछ अल्फा पार्टिकल इसका पथ को थोड़ा डेविएट करके कुछ ऊपर के तरफ और कुछ नीचे के तरफ ग्रेजुअली शिफ्ट हो चुका है। इसीलिए the thickness of the scintillating radiation is more at the top as well as at the bottom except the middle portion. So the next observation, that is number B, it will be
0.8%, or you can say 1 out of 1000 alpha particle suffer some deviation. Alpha particles suffer some deviation. This was the second inference given by Rutherford. Now the third inference, that is most important, कि ये जो स्क्रीन है उसका जो एकदम मिडिल पोर्शन है वो क्यों नहीं जल रहा है? तो रदरफोर्ड वाज श्योर कि ये जो मिडिल पोर्शन से जो अल्फा पार्टिकल जा रहा था वो ऑपोजिट डायरेक्शन में पहुंचा ही नहीं, इसीलिए ये जो पोर्शन है दैट इज बेसिकली डल एंड इट इज नॉट ब्राइट. इसको श्योर होने के लिए रदरफोर्ड क्या किया, ठीक ऐसे पोर्शन में, ऐसे जगह पे he placed another zinc sulfide screen and he was wondered कि ये जो स्क्रीन है ये इधर जल रहा था. That means ये जो अल्फा पार्टिकल जा रहा है ना वो यहां से डेविएट करके पीछे की तरफ कहीं पे आ रहा है, and therefore this portion is dull and this screen is bright. मतलब one alpha particle out of 20,000 or 0.2% alpha particle, it suffers a huge deviation, or you can say it is almost 180-degree deviation. So the third point is 0.2% or 1 out of 20,000 alpha particles suffer almost 180-degree deviation. नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द कॉजेज बिहाइंड दिस ऑब्जर्वेशंस. देखो, व्हाट वाज द फर्स्ट इन्फरेंस? 99% अल्फा पार्टिकल सीधा चला गया. सपोज आई एम ट्राइंग टू वॉक इन दिस फैशन. हम सीधा जा सकते हैं. क्यों जा सकते? क्योंकि मेरे सामने कोई ऑब्स्टैकल नहीं है. अगर मेरे सामने कोई ऑब्स्टैकल रहता तो हम तो अटक जाएंगे, हम तो नहीं जा पाएंगे उस तरफ. दैट मीन्स ये जो गोल्ड फॉयल है इसका मैक्सिमम पोर्शन ही खाली है, एंड देयरफॉर द अल्फा पार्टिकल्स कैन गो विदाउट एनी डेविएशन और विदाउट एनी प्रॉब्लम. सो द फर्स्ट कॉज आई कैन राइट कि मोस्ट ऑफ द प्लेसेस इन गोल्ड एटम इज एम्प्टी. Most of the places in gold atom is empty. गोल्ड परमाणु का, गोल्ड एटम का मैक्सिमम पोर्शन ही खाली है, एंड देयरफॉर द अल्फा पार्टिकल्स कैन गो विदाउट एनी प्रॉब्लम. सेकेंड कॉज क्या है? 1 out of 1000 और 0.8% अल्फा पार्टिकल सफर्स अ डेविएशन. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. देखो, अल्फा पार्टिकल का चार्ज क्या है सर? पॉजिटिव चार्ज. अच्छा, एक पॉजिटिव चार्ज कब डेविएट होता है? जब उसके सामने सेम चार्ज आ जाता है ना. एक पॉजिटिव चार्ज सपोज जा रहा है, अगर उसके सामने एक सेम चार्ज आ जाएगा तो सेम चार्ज रिपेल ईच अदर, ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर. तो ये पॉजिटिव चार्ज के सामने एक अगर पॉजिटिव चार्ज ही आएगा, देन दिस पार्टिकल विल हैव टू सफर सम डेविएशन. दैट मीन्स गोल्ड एटम में एक छोटा सा जाएगा ऐसा है जिसमें पॉजिटिव चार्ज इज प्रेजेंट, एंड दैट पोर्शन इज नाम्ड एज न्यूक्लियस बाय रदरफोर्ड. So this is the second observation. Nucleus which is positively charged, nucleus which is positively charged is present at a very small space in gold atom, at a very small space in gold atom. And not only this, for NEET and JEE we have to learn another few terms, like Rutherford calculated more or less the radius of gold atom, and he found that the radius of gold atom is close to 1 angstrom or 10 to the power minus 10 meter. Okay, another thing, he also calculated the radius of nucleus, and according to Rutherford that is close to 1 Fermi, which is equal to 10 to the power minus 15 meter. So guys, can you quickly calculate how much an atom is bigger than a nucleus?
What is the ratio of the radius of an atom and the nucleus? देखो एक एटम का रेडियस कितना है सर? ऑलमोस्ट 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। और एक न्यूक्लियस का रेडियस कितना है? 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर। तो ये रेशियो देखो लगभग 1 लाख के बराबर है। तो कैन यू इमेजिन, एक एटम अगर एक बड़ा सा एक मैदान है क्रिकेट का, तो उसमें एक जो बॉल होता है ना, that small a nucleus is actually present. तो according to Rutherford, if a ball is nucleus, then the whole stadium can be regarded as an atom, क्योंकि एक एटम एक न्यूक्लियस से 1 लाख गुना बड़ा होता है बेसिकली। थर्ड ऑब्जर्वेशन, what was the third observation of Rutherford? 1 out of 20,000 alpha particles suffer almost 180 degree deviation. मतलब ये जो अल्फा पार्टिकल जा रहा था उसमें लगभग 180 डिग्री का डेविएशन हम लोग देख रहे हैं। इसका कारण क्या है? इसका तो एक कारण ऐसा हो सकता है कि न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है। अच्छा, अगर न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है तो ये वाला अल्फा पार्टिकल का भी तो डेविएशन हो सकता था, तो ये पीछे की तरफ 180 डिग्री मुड़ के क्यों आ गया? इसका कारण ये है कि न्यूक्लियस इज एक्सट्रीमली हेवी। सपोज आई हैव अ क्रिकेट बॉल इन माय हैंड and I am throwing the ball to suppose water. Will the ball come back to my hand? No, because water का जो डेंसिटी है वो बहुत कम है। मगर अगर वही क्रिकेट बॉल को मैं कोई वॉल के तरफ थ्रो करूंगा, इट विल कम बैक। क्यों? क्योंकि वॉल का जो डेंसिटी है वो बहुत ही ज्यादा है। दैट मीन्स ये जो अल्फा पार्टिकल यहाँ पे जिसके साथ इसका कॉलिशन हुआ, दैट मीन्स न्यूक्लियस, उसका डेंसिटी बहुत ज्यादा है। दिस इज द थर्ड पॉइंट। Density of nucleus is very high. Density of nucleus is very high. Rutherford wrote in his book कि एक एटम का जितना सारा मास है ना, that is concentrated in only its nucleus. And according to Rutherford, the density of nucleus that we need to remember, the density of nucleus is 10 to the power 11 kg per centimeter cube or 10 to the power 14 gram per centimeter cube. So this much huge value density of a nucleus is actually, and this is the structure of an atom of Rutherford's model, where nucleus is a small but highly dense substance present in the center of an atom, and there is a huge atom 1 lakh times ज़्यादा है उसका periphery, where electrons are spinning or rotating. So this is the model of Rutherford. We can come from this famous experiment, but this model actually was not successful. So in the last part of today's class, we need to learn about the drawbacks of Rutherford's atomic model. So next point will be the drawbacks of Rutherford's atomic model. देखो, the first drawback is quite easy. Nucleus और एक ही शेल है जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। अच्छा, एक एटम में क्या सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन रहता है? नो, एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स रहता है। तो अगर एक एटम में एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स है तो ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर रोटेटिंग इन द सेम शेल, एंड वी नो कि इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड। सपोज यूरेनियम है, उसमें 92 इलेक्ट्रॉन्स होगा और वो 92 इलेक्ट्रॉन्स एक ही ऑर्बिट में घूम रहा है। Is it feasible? Will not the electrons repel each other and some electron will move away like this due to the repulsion force according to the force theory of Newton? So all the electrons cannot move in the same shell. So the first point is all the electrons cannot move in a single orbit proposed by Rutherford. This is the first drawback. Second drawback. This drawback was given by a very famous scientist, Maxwell. He was actually a scientist of electromagnetism. What Maxwell told is that nucleus has a charge. Electron also has a charge. And the charge are opposite. So there will be a tendency inside the electron to gradually move towards the nucleus.
And as a result, what happens? The electron will follow a spiral path and it will come closer to the nucleus, and the whole structure of an atom given by Rutherford, it will be going to bend. And not only this, the time taken for this process to obey this spiral path, etc., it is as less than 10 to the power minus 8 second only. Can you imagine? So according to Rutherford, his model is only stable only for 10 to the power minus 8 second. So the second proposal given by Maxwell is when two opposite charges are present close to each other, when two opposite charges are present close to each other, there will be an attraction. There will be an attraction. इन दोनों में attraction है. Hence, electron will follow a spiral path. Electrons will follow a spiral path and hit the nucleus, and will hit the nucleus within 10 to the power minus 8 second. So this is the second drawback of Rutherford. Now, the final and the last drawback of Rutherford, this is more serious. This is even more serious. देखो, ये है हमारा न्यूक्लियस और ये है हमारा इलेक्ट्रॉन जो एक सर्कुलर पथ फॉलो करके न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है. Yes, and what is happening according to Maxwell? Electrons are continuously losing energy, obeying a spiral path, and eventually it will collide with the nucleus. So as a result, electrons are losing energy continuously. True or false? True. इलेक्ट्रॉन ये जो काइनेटिक एनर्जी से घूम रहा है उसका फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो हो रहा है. दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स आर कॉन्टिन्यूअसली लूजिंग इट्स एनर्जी. Okay, so I am going to write this line. Here, electrons are losing energy continuously. Electrons are losing energy continuously. अच्छा, तुम लोग पढ़े हो फिजिक्स में कि एनर्जी कैनॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड. इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अदर फॉर्म इफ रिक्वायर्ड. तो ये जो एनर्जी इलेक्ट्रॉन से बाहर जा रहा है, क्या ये डिस्ट्रॉय हो जा रहा है? नहीं, इट विल कम आउटसाइड द एटम. तो अगर हम लोग एक स्पेक्ट्रोमीटर को बाहर फिट कर दे इन दिस वे, व्हाट इज अ स्पेक्ट्रोमीटर? इट कैन डिटेक्ट एनी एनर्जी और स्पेक्ट्रल लाइंस कमिंग आउट ऑफ एन एटम. तो ये स्पेक्ट्रोमीटर को तो कॉन्टिन्यूअसली रेडिएशन डिटेक्ट करना चाहिए. इज इट? इलेक्ट्रॉन अपने एनर्जी ग्रेजुअली कॉन्टिन्यूअसली छोड़ रहा है, तो वो एनर्जी स्पेक्ट्रल लाइन फॉर्म करके, रेडिएशन फॉर्म करके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव फॉर्म करके बाहर के तरफ आएगा. एंड दिस स्पेक्ट्रोमीटर विल कॉन्टिन्यूअसली इंडिकेट कि यस दिस रेडिएशन आर कमिंग आउट ऑफ एन एटम. मगर ये नहीं हो रहा है. ये स्पेक्ट्रोमीटर डिटेक्ट तो कर रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को, मगर वो कॉन्टिन्यूअसली नहीं, वो डिसकंटिन्यूअसली डिटेक्ट कर रहा है. ये कैसा थ्योरी हो गया? सोचो, एक आदमी अपना एनर्जी कॉन्टिन्यूअसली लूज कर रहा है, मगर उसका एनर्जी बाहर कॉन्टिन्यूअसली निकल नहीं रहा है. मगर कुछ तो गड़बड़ है इस सिचुएशन में. आइदर दिस मॉडल इज ट्रू और द मैक्सवेल थ्योरी ऑफ लूजिंग एनर्जी इज फॉल्स. तो एनीथिंग इज एक्चुअली सस्पिशियस प्रेजेंट इन द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल. So electrons are losing energy continuously, but those energy are not being detected. Those energy are not being detected by a spectrometer fitted outside gold atom, fitted
outside gold atom. So these three are three epoch-making drawbacks of this Rutherford's atomic model. So irrespective, Rutherford discovered nucleus and received a Nobel Award in the year of 1927. But after the year of some years, his model was discarded, and a new model that we will learn in the next class, that is called Niels Bohr's atomic model. He actually cleared all the confusion from this Rutherford's model in the next class. तो बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्लास के लिए तैयार हो रहा है और जल्दी मिलते हैं तुम लोगों से. बाय.